This part of the bulletin is brought to you by Gautam Bali Makeup Studio and Academy, Sector 1, Chanihima, Jammu. Good evening all, you're watching the news now and I am Bindya with the news at 5. Let's have a look at the headlines first. Australia recognizes Bharat Biotech's Covaxin for purpose of establishing a traveller's vaccination status. 1 killed, 3 injured as private vehicle falls into gorge in Kupwara. PDP PAC meeting cancelled as Mehbooba Mufti house arrested. Firdaus Taq hits back at centre. And tensions enrage between China and Taiwan. 8 Chinese fighter planes entered Taiwan's defence area. And now the news in detail. Australian government today recognized Bharat Biotech's Covaxin for the purpose of establishing a traveller's vaccination status. This was informed by the Australia's High Commissioner to India, Barry O'Farrell AO. The TGA has recognized the Covaxin for travellers aged 12 and above, which means that the Indians who have been vaccinated with Covaxin in India would be considered as fully vaccinated by the Australian authorities as well. Nawab Malik has made a very serious allegation against former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Malik alleges that drugs are being traded in Maharashtra and Goa under the patronage of Fadnavis. Countering this, Fadnavis has said that Nawab Malik has links with the underworld, and he said that the picture shared by Nawab Malik of his wife Amrita and drug smuggler Jaideep Rana is 4 years old. He said that he and his family have no relation with Jaideep Rana. जिसने वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। सबसे महत्व की बात यह है कि ये संपूर्ण रिवर मार्च के जो लोग हैं, इसमें जो प्रमुख है मिस्टर चौगुले, इन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ ये आए हुए थे, इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फ़ोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फ़ोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फ़ोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फ़ोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी तीसरे आदमी के साथ फ़ोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। वो हिंदी में कहते हैं खिसिया। Former Jammu and Kashmir Chief Minister and People's Democratic Party Chief Mehbooba Mufti has been placed under house arrest on Monday morning. Mehbooba Mufti was planning to go to Shopian district. It is being told that due to security reasons, they were not allowed to go to Shopian. However, no statement has come from the police in this matter yet. Earlier, PDP President Mehbooba Mufti was placed under house arrest on the 9th of this last month. Hitting back at the Centre for House Arrest of Mehbooba Mufti, the PDP senior leader Firdaus Taq tweeted a photo while in flight and wrote, and I quote, "I just learned the PAC meeting of PDP I am heading for will not be convened because Modi ji feels this is an act against the national integrity and security," unquote. Even before Diwali, LPG customers have suffered a major setback. Oil marketing companies have increased the price of commercial LPG cylinder by rupees 266 per cylinder with effect from November 1st. It is a matter of relief that there has been no increase in the price of domestic LPG cylinders. After this increase in the price of LPG cylinders, now the prices of commercial cylinder 19 kilogram have gone up to rupees 2000.50 in Delhi and rupees 1950 in Mumbai.
A 32-year-old man was killed and 3 persons were injured when a vehicle they were travelling in met with an accident in Kralpora area of North Kashmir's Kupwara district. A car on way to Kupwara fell into a deep gorge in Upper Nashaya area. 4 persons on board were injured and immediately rushed to Sub-District Hospital Tangdhar. However, one of them, Nisar Ahmed Khan of Kralpora, succumbed to the injuries on way to hospital. The injuries have been identified as Iqbal Ahmed Awan, Altaf Ahmed Awan, Ashik Hussain Butt, all from Kralpora. The Aam Aadmi Party seems to be fastening its seat belts for having a better youth outreach in J&K, for which the party's Kathua unit today elected Advocate Akash Deep as the district youth head for Kathua. Convener O.P. Khajuria said that this time Aam Aadmi Party will stand by the young human resource of the UT to fulfill the demands of common masses, keeping political aspirations at bay. आज स्टेट का दर्जा जाने के बाद भी अब हम यूनियन टेरिटरी में आ गए हैं। निस्संदेह ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं बात हमें तंग कर रही है। अरे भाई, राज्य स्टेट एक कंट्री के नाम से जाता था, फिर एक विशेष राज्य था। आज इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया। आम आदमी पार्टी निस्संदेह मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये प्राथमिकता के आधार पर जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएगी। और यहाँ तक अगर लोग इन बातों में समझ गए तो मुझे लगता है लोगों का आशीर्वाद होगा और आने वाले वक्त के अंदर आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर जम्मू कश्मीर में लोगों की सेवा करने में तत्पर आगे रहेगी। कन्वीनर केजरीवाल जी हैं, उनकी सोच पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोज़गार, जैसे हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जिन लोगों को भी रोज़गार मिलता है उनकी सैलरी कम है। जो बड़े बड़े मंत्री चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो फैक्ट्री से पैसा लेके चले जाते हैं और जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं वो नौकरी जो करते हैं उनको कम वेतन दिया जाता है। कम से कम 18,000 रुपया वेतन बच्चों को देना चाहिए और 4 छुट्टियाँ देनी, 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, जो कि उनसे ड्यूटी भी ज़्यादा लेते हैं। और जो करप्शन का मामला है और जो लोग करप्ट लोग हैं जो इनको नौजवानों को दबा रहे हैं और जो हमारे नौजवान हैं नशे की तरफ जा रहे हैं। नशे का कारण ये है कि उनको रोज़गार नहीं है, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। ना हमारी स्टेट में कोई रोज़गार है, जैसे हमारे एलजी साहब हैं वो भी भाजपा के हैं, उनकी भी कोई ऐसी सोच नहीं है कि लोगों को नई नौकरियां दी जाएं। ये मैसेज रहेगा कि नौजवानों को जगाना है, ये सोए हुए हैं, इनको जगाकर इनको ये बताना है कि आपको पढ़ लिख के नौकरियाँ मिलनी चाहिए, नौकरी जो है उसमें अच्छा वेतन मिलना चाहिए ताकि अपने परिवार को वो चला सकें। The Indian Army organized a medical camp in village Dhanchak and Pangyari, Sohal in Jodia sector to reach out to the rural populace. A large number of locals participated in the camp and availed benefit of a much needed diagnosis and distribution of medicines. Masks and hand sanitizers were also distributed among the residents. From across the world, 8 Chinese fighter planes entered Taiwan's defense area. Tensions between the two countries increased again. Tensions have escalated once again between Taiwan and China. At least 8 Chinese warplanes infiltrated Taiwan's air defense area on Sunday amid rising military intrusions from China. This was the 6th attack on Taiwan by China in October. Taiwan News quoted the Ministry of National Defense as saying that 6 People's Liberation Army Shenyang J-16 fighter jets, while a KJ-500 and a Sangsi Y-8 anti-submarine warplane entered Taiwan's air defense. And from across the world of sports, the top-ranked Serb Novak Djokovic can break a tie with American great Pete Sampras with a record 7th year-end number 1 finish. Djokovic currently has a lead of 1,900 points over number 2 Daniil Medvedev in the race of Turin and could clinch the year-end number 1 spot in Paris before the end of the season. He said that he is in a pretty good position in terms of the ranking points and the race hopefully can have a strong finish of the season and clinch the year-end number 1. And that's all in this news bulletin. For latest update and more news, stay tuned with the News Now web and keep reading the News Now e-print and daily newspaper. Jai Hind.